Good morning, student. Welcome to your social science class. I have taken 3 parts from the lesson number Natural Vegetation of Wildlife. Today, we are taking the next and the last topic of this lesson, and now we will take the study about the fauna. In my previous lecture, you have read about what do you mean by natural vegetation, how many species we are having in India, and what is the place in the flora in India or in the world. Now student, we will take the fauna. Flora means plants, it means vegetation, or today in this lecture we are taking the wildlife. Wildlife means we are taking study about the fauna. यानी कि इस आज के लेक्चर में हम वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, और जंगली जानवर ही वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो नोन एज fauna. As in India, we are having the variety in flora and factors I told to you, like soil, land, temperature, precipitation. These are the lot of factors which are affecting the variety of flora. In a same manner, today we are saying these are also the main factors which provide a variety of fauna in India. India is not having one type of a climatic condition. That's why, due to the variation in climatic condition, that's why we can say India is also very rich in fauna. So we are taking about the wildlife. Like the flora, India is also rich in fauna. It has approximately 90,000 एनिमल स्पीशीज, यानी कि भारत में 90,000 तरह के एनिमल्स या जीव जंतु, जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं. द कंट्री हैज अबाउट 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. भारत में कितनी तरह के जानवर, कितनी तरह की चिड़िया हैं? नियर अबाउट 2,000 स्पीशीज, एंड they constitute 13% of the world's total. यानी कि पूरे विश्व का यदि हम अनुमान लगाएं तो 13% जो वर्ल्ड के फोना है we will found in India. There are 2,546 species of the fish which amount the nearly 12% of the world stock. It also share between 5 and 8% of the world's amphibian, reptiles and mammal. In the short, I am telling you, wildlife, India has approximately 90,000 animal species, 2,000 species of bird and 2,500 species of fish. Now student, due to the variation in climate, soil and land in India, in every state you can see the variation in animals. The elephants are the most majestic animal among the mammal. They are found in hot and wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. One-horned rhinoceros are mainly found in Assam and West Bengal. Indian lion found in the Gir forest in Gujarat. The Gir forest is very famous. It is located in Gujarat. So we can say arid areas of the Rann of Kutch and the Thar desert are habitat for the wild ass and the camels. जितने हमारे कैमल्स में वैरायटी मिलेगी, जंगली गधे जितने मिलेंगे, वो हमारे रन ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात के एरिया में आपको ये
और राजस्थान के एरिया में आपको ये मिलेंगे। इंडियाज विजन, नीलगाय एंड different species of deer or some other animal found in India. It has several species of monkey. यानी कि यहाँ पर बंदर भी एक वैरायटी के नहीं है, you will found a variety in monkeys. But student, one drawback is in India, that is major threat to nature. यानी कि आज हमने आपको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ाया, लेकिन लोगों के लालच के कारण आज क्या है, जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है और जंगलों को काटा जा रहा है, जिसके कारण जंगली जानवर घर से बेघर हो रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे मेजर थ्रेट टू द नेचर, यानी कि प्रकृति को किन लोगों से खतरा है। The major cause for this major threat to the nature also hunting by greedy hunters for the commercial purpose. आज जंगली जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा खतरा होता जा रहा है, क्योंकि आज का इंसान बहुत ज़्यादा लालची है, ग्रीडी है, जिसके कारण वो अधिक प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जंगलों को खत्म कर रहा है। यानी कि when the forest will be finished, you can imagine our wildlife will be totally destroyed. ये हमारी पेड़ पौधे खत्म हुए तो वाइल्ड लाइफ को खत्म करने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो there are a lot of reasons which are very harmful for our wildlife, or we can say these are very harmful for the flora and the fauna. Hunting, first point. Second, due to the expansion of agriculture, you know, population is increasing day by day and they need more food, and for the food, flora are exploiting, flora are destroying. That's why this is the second factor, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो खेती का जो बढ़ता स्वरूप है एंड द फॉर्म ऑफ द कमर्शियल एग्रीकल्चर। यू नो स्टूडेंट, इन प्रीवियस टाइम ह्यूमन बींग्स वर डूइंग द एग्रीकल्चर, बट दैट वॉज नॉट कमर्शियल, दैट वॉज सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस मीन्स जब इंसान अपने और परिवार के पालन करने के लिए फसलों को उगाता है, तो ये कमर्शियल नहीं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहलाता है। बट नाउ टूडेज इंसान को लालच है एंड नाउ फार्मर्स आर ग्रोइंग 3 crops in 1 year. That's why due to the expansion, due to the growing population, flora are destroyed, and with the flora, fauna is also destroyed. रेकलेस कटिंग, अंधाधुंध कटाई, यानी कि बिजनेस को फैलाने के लिए, यानी कि पेपर बनाने के लिए और दूसरी चीजें वनों से बनाने के लिए इन्होंने रेकलेस कटिंग करनी शुरू कर दी, अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी, जिससे पेड़ खत्म हो रहे हैं। और मैंने आपको बार बार बताया, when the flora will be destroyed, fauna naturally will be destroyed. फ्लोरा खत्म होगा तो फोना का जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि जंगल जो होते हैं वो जंगली जानवरों के घर होते हैं। तो बच्चों, दीज आर द फैक्टर्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फ्लोरा एंड फोना। अगेन आई एम टेलिंग यू, द मेन कॉज फॉर द मेजर थ्रेट टू द नेचर आर hunting by greedy hunters for commercial purpose. Pollution due to the chemical and industrial waste, acid deposit, introduction of alien species and reckless cutting of the forest of bring land under cultivation and inhabitation are also responsible for the imbalance. इन सब कारणों से हम कहते हैं
कि प्रकृति आज बैलेंस में नहीं है। समझाया? बैलेंस का मतलब है क्योंकि लालच के कारण इंसान अंधाधुंध इनको खत्म करते जा रहा है। नाउ लास्ट टॉपिक वी आर टेकिंग द स्टेप बाय द गवर्नमेंट, यानी कि फ्लोरा और फोना के प्रोटेक्शन के लिए, बचाने के लिए, सेव करने के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के फ्लोरा और फोना खत्म हो, क्योंकि यही फ्लोरा और फोना इंडिया की पहचान है। तो देयर आर द लॉट ऑफ रीजंस ऑल्सो, देयर आर लॉट ऑफ स्टेप which was taken by the government to protect flora and fauna of India. First, setup of biosphere reserve. सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं ताकि हम उसी नेचर में, उसी एनवायरमेंट में इन फ्लोरा और फोना को रख सकें। असिस्टेंस ऑफ बायोटेक्निकल गार्डन्स, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. So student, government is also giving a solid step to protect them. We can say 14 biosphere reserve have been set up in the country to protect flora and fauna. 4 out of these at the Sundarban in the West Bengal, Nanda Devi in Uttarakhand, the Gulf of Mannar in Tamil Nadu, नीलगिरी कहाँ है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के एरियाज में have been included in the world network of biosphere reserve. Second, we can say financially and technical assistance in providing to many botanical gardens by the government since 1992. Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard and many other economic development projects have been introduced. 89 National Park, 490 Wildlife, 490 Wildlife Sanctuaries and Geological Parks. Gardens are set up to take care of national heritage. So student, all of us must realize an importance of the natural ecosystem